Okay, let's start with today's session. So, depending upon the data, uh, we can categorize different type of learning. Yesterday we talked about the supervised learning, and in supervised learning, if you look at the training data, so for each example you will have the correct answer. For each example you will have the correct answer. So while when your learning algorithm uses this data to train, right, so it has some kind of supervision or some kind of teacher that is telling that for this example this is correct, for this example this is correct, right? So that is why this kind of learning falls under, or we have categorized this as a supervised learning, right? We will also talk about unsupervised learning, and there you will see that you will not have any kind of supervision, right? So there will be no label or there will be no output of the examples or the input. There will be no output for any input, right? So there will be no supervision, so that kind of learning will fall under unsupervised learning. And later on we will see uh, different type of learning under unsupervised setting. And also yesterday we talked about that within this supervised learning, we depending upon the y, that y, the value y it takes, we have the regression problem. So in regression problem, this y takes the value, takes any reasonable value, any real number reasonable value. So here y takes the real number, right? So that kind of problem will fall under the regression. And if y takes the discrete value, then we classify that kind of problem as a classification problem, right? So depending upon y, if y takes the value, then that would be under regression problem. And if y takes the any discrete value, or it could be two number of discrete value, or it could be more than two number of discrete value, right? So that kind of problem will fall under classification problem, right? And we have also seen that in supervised learning setting, this is the big picture, that this this is the flow diagram on a high level that we are going to follow under supervised learning setting, right? So we will have the training data, we will have n number of training data. Using this training data, our learning algorithm uses this training data and it produces a learned model, right? And and this learned model approximate the ideal model or the target function. So what is this target function? So you can think of this as a ideal function that we want to achieve, right? In case of, like in case of this classification problem, this function is some target function or some ideal function that takes input these features and gives you that if it is a ham or a spam, right? So this is just a hypothetical function or just a target function, why we are saying this as a target function, because we are trying to achieve this function, right? We will not be able to exactly achieve this function, but we will be some around this function through our learning, and we will be able to approximate this function, right? Because we have already talked about that, why we are going through this process, why we are having the huge data, and on huge data we are learning, and that learning algorithm is producing some hypothesis function or some learned model, right? So because we don't know this function, right, through the learning process, what we are trying to do, we are trying to find a function or a learned model or a learned hypothesis that will approximate this target function. So I think the name is clear why we are calling it as a target function. Let me write down this also. So this is nothing but a target function, right? And once we have this learned model, so
what we expect from this learn model, that it will do good on unseen data. what what do I mean by unseen data? So the unseen data are those data which has not been seen by our learning algorithm through the training data, right? So what we expect, that our learn model will do better on any new or unseen data, right? And it will give you the output or the estimate of the output, right? And so depending upon the problem statement, we will have different kind of learning algorithm, and that is what we are going to look, right? So we will start with linear regression, right? Before going into that, let me just give you some terminology that we will be using under supervised learning setting. So for whatever the learning algorithm we will be talking about, we will be using these variables. So like the n will denote the number of training set or examples, you can say the total number of examples. Like if you look at this particular data, how many examples do we have? So this is the first house, and corresponding to that we have this output. So this is the first example, this is the second example of the house, this is the third example of the house, and this is the fourth example of the house. So we have here four examples. So here n is equal to 4, right? So we will use the variable n to denote the number of training set or the number of examples. D represents the dimension of input. If you take this example, if I ask you that what's the dimension of the input, first of all, what is input? What's the input? So this is input, let me denote this with x, right? And what's the dimension of that? Dimension is here 1, right? Because how many features do we have? We have only one feature of a house, right? So like if you have to write the first input, so example of the first input, and one more thing, whenever we will talk about ith example, so if I say the first example or the, so we are going to denote this as a subscript. So this one denotes the first example, right? And x denotes the input, so that will be 2014, right? And this input vector for this particular example belongs to some real number, right? Because here the dimension is 1, so r to the power 1, right? So if I ask you what will be the x4, so here the superscript just tells you that it is the fourth number of example. So 1 2 3 4, fourth number of example. So we are just asking about the input, so it is nothing but 3600, right? So we will be just using the superscript, right, to denote that what number of example we are talking about, right? It is not the power, it is not x square. What does it mean? It means the second example, whatever we are talking about the input of the second example, right? So x to the power I is the ith example, and since this is x, so input ith example input. Similarly for here, ith example output, right? In this case, if I ask you that what will be y1,
So we are asking about the output of the first example, that is 400, right? And what this will denote, so this pair will denote one example. So if I ask you what will be the x1 comma y1 for this particular example, so that would be 2014 comma 400, right? What's the input of the first example? What's the output of the first example? So this is the our first example, that is x1 or y1 pair, right? And one more point to note here, so this yi, sometimes we call it as output and labels or the ground truth, right? And in case of the regression, this y will take any real value, right? And in case of classification, the any y will take a discrete value, right? I think let's do a few of the examples based on these terminology so that you are clear here, right? So let's take this classical example that we were talking about. So the very first question, let me ask you that so again this is the example of house price prediction. So predict the price of house given its feature, right? So we have the features and this is the price. Let me first of all ask you, uh, so this is a supervised learning, it will be a supervised learning, and under the supervised learning what kind of problem this will be, a regression problem or a classification problem? How do you decide that if it is a regression problem or a classification problem? Depending upon the output. What's the output? So why this, the price could be any real value, right? So that means it is a regression problem. Let me ask you another question. uh, what is the, so what is here n, what is here n and d? If you recall the terminology, what we are calling it as a n. So n is nothing but a number of example in a data set. So this we are calling it as a data set, number of or a training example. So number of examples in a training set, that will be n. And how many such examples do we have? So this is the feature of one house and this is the output of the first house. This is the feature and this is the price of the second house. This is the feature and this is the price of the third house. This is the feature and this is the, so how many such examples we have? So we have 4 examples. So what will be n? So n will be 4. What is d? D is the dimension of input, right? So what's the dimension of input? So if you take any input vector, so input, right? If you take any input, let's say ith, right? How many feature it will have for this particular example? If you take the first input, then it has the 3 features. If you take second, it has the 3 features. So if you take any ith, or let's call the first or the second, any ith, then it will have
how many features? 3 features, right? So, and we are going to denote all those features as a component of this vector. So, right, so it has, so here D is nothing but the, what is D here? Dimension of the input, right? So using 3 component we can list out these features, right? And we can just put this component, these features as a as a component of the vector, and we are going to call this as a input vector, right? So for this, if we take the first example, then it will have the size, that is 2014, and number of bedrooms, that would be 3, and the age of that first house is 15, right? And how many components it has? 3 component. So it belongs from 3-dimensional space, and if you take any xi, right, that will belong from r to the power 3. So D is 3, right? Now this question, right, so this is, we are talking about input, and we are talking about the second example, right, as a vector in RD. So how we can write this one? So this will be a vector, input vector, with how many component? It will have the 3 component, and for what number of example we are talking about? The second number of example. So we can write this like this. So the number of size for the second house is the size is for the second house is 1600 square feet, and number of bedrooms the second house have 2, and the how old the house is, so it is 10 years old, right? Now let me ask you here one question, that or let me give you one more terminology, the training matrix. And that is nothing, what you do, you just put all of these input vector as a row of this training matrix. So this we have written as a column vector. So if we want to put this as a row, what we will do, we will take the first vector and we will take the transpose it, right? And that will be the column of this training matrix, right? Similarly, the second vector, input vector, and transpose that. And how many such row vector we will have? जितने examples होंगे, right? So this will be nth vector and transposer of it. If I ask you what will be the dimension of this training matrix, how many row it will have and how many columns it will have? थोड़ा सोचो आप. So अगर मैं इस वेक्टर को एज अ रो वेक्टर लिख रहा हूँ, सो 2014 315, राइट? सो इस वेक्टर को ही मैंने एज अ रो रखा है, तो कितने कॉलम्स होंगे? 3 कॉलम्स होंगे, राइट? इसी तरह से सबके 3 कॉलम्स होंगे. रो कितने होंगे? रो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, राइट? तो रो, सो इस ट्रेनिंग मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे? एन. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? जितने फीचर्स होंगे, राइट? तो एन क्रॉस डी का ये ट्रेनिंग मैट्रिक्स जिसका जो कि इसका डायमेंशन होगा, राइट? अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हम लिखेंगे, अगर इसमें हम इस ट्रेनिंग मैट्रिक्स को यहाँ लिखें इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, एंड लेट्स डिनोट दिस एज विद द कैपिटल लेटर एक्स, राइट? सो इसमें क्या हो जाएगा? दिस वेक्टर, द फर्स्ट एग्जांपल, उसका ट्रांसपोज ले लो, सो दैट विल बी 2014 315 1600 2 10 and
2400 420 141625, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखो इधर, तो along दिस अगर आप कोई भी एक रो पिक कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप एक एग्जाम्पल पिक कर रहे हो, एक हाउस का एग्जाम्पल पिक कर रहे हो, एक पर्टिकुलर हाउस का एग्जाम्पल पिक कर रहे हो। अगर आप किसी भी कॉलम को पिक कर रहे हो, दैट मीन्स आप किसी एक फीचर को पिक कर रहे हो, वन फीचर ऑफ अ हाउस, राइट। एंड यहाँ पे साइज कितना है इस ट्रेनिंग मैट्रिक्स का, दैट वुड बी n क्रॉस d। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कितने हैं, 4 हैं, और नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, 3 हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इस एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आउटपुट वेक्टर लिखने के लिए, तो सबसे पहले तो कोई भी एक, अगर मुझे अगर y2, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आउटपुट वेक्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ, आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूँ। y का मतलब क्या हो गया, आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ जो 2 लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट में, इसका मतलब है कि मैं सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल के आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूँ। सो दैट इज 330, राइट। अब हम लोग इसको जो है y इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं। सो कैपिटल Y, दैट मीन्स कि द फर्स्ट component of the output and the second component and the third component of output and so on. How many such component, or what will be the dimension of this output vector, डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ मेरे पास एग्जाम्पल्स है, राइट। सो दिस इज द y1, दिस इज द y2, दिस इज द y3 एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, सो yn, राइट। सो इनका डायमेंशन क्या होगा, अगर इसको हम एज अ वेक्टर लिख रहे हैं सारे आउटपुट को, सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस y, कितने रो हैं, कितने रो होंगे, n रो होंगे, कॉलम कितने होंगे, 1, तो n क्रॉस 1। तो सारा चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हो गया। ये ऐसा इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग इसका यूज करेंगे, राइट। सो वी विल बी लुकिंग एट सो दिस रिग्रेशन प्रॉब्लम को है ना, हम लोग डिफरेंट वे से देखेंगे, राइट। डिफरेंट लर्निंग एल्गोरिज्म से देखेंगे, उसका एक क्लोज्ड फॉर्म भी देखेंगे जिसको कि नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि ये सब सारी चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसमें कोई भी किसी तरह का डाउट, आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, सेम चीज़ करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू भी, राइट। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो प्रॉब्लम है आपका क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल करेगा, सॉरी प्रॉब्लम का क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग होगा इसमें, राइट। क्यों सुपरवाइज्ड लर्निंग होगा, क्योंकि ये ईमेल स्पैम डिटेक्शन है, और हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। तो प्रिडिक्ट वेदर एन ईमेल इज स्पैम और नॉट अ स्पैम, राइट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। अब ये आपके पास ट्रेनिंग एग्जांपल्स है, राइट। कुछ फीचर्स दिए हुए हैं एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट फीचर उसमें आपका ये लेबल दिया हुआ, दैट मीन्स ये आउटपुट दिया हुआ है कि वो स्पैम है या नहीं है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ supervised learning problem is this? पहला क्वेश्चन यही है, रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कैसे पता चला क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, सिंपली आप y को देखो, जो भी आउटपुट है corresponding टू इनपुट, राइट। यानी तो ये वैल्यू 1 लेगा यानी तो 0 लेगा, उससे ज़्यादा कुछ लेगा नहीं, राइट। सो डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर फॉल करेगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें ये बताओ मुझे आप कि जो ट्रेनिंग मैट्रिक्स होगा, और लेट मी आस्क दिस, व्हाट विल बी द x3। सो हम लोग क्या बात कर रहे हैं,
इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स मतलब इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं, और हम लोग थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो दैट विल बी अ वेक्टर, राइट। तो थर्ड एग्जाम्पल में पहला क्या है कि टोटल उसमें उस ईमेल में कितने नंबर ऑफ फ्री वर्ड्स जो हैं वो है, तो 2 है। दूसरा फीचर क्या है कि उसमें उस पर्टिकुलर ईमेल में क्लिक वर्ड जो है वो कितनी बार मेंशन है, उसमें क्लिक वर्ड है कि नहीं है, तो है। थर्ड एग्जांपल देखो आप, राइट। और क्या उस ईमेल में डॉलर कंटेन है, मतलब कंटेन डॉलर जो है वो वर्ड है कि नहीं है, तो नहीं है, राइट। सो दिस इज योर वेक्टर, राइट। और द थर्ड एग्जाम्पल है जिसका कि इनपुट जो है ये है, राइट। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि y थर्ड क्या होगा, so that will be a number and that is 1, right। मैं पूछूं यहाँ पे n क्या होगा, n क्या था हमारे टर्मिनोलॉजी में, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। सो पहला ईमेल जिसमें कि 3 जो है वो फ्री काउंट है, फ्री वर्ड मेंशन है 3 टाइम्स, उसमें क्लिक वर्ड जो है वो मेंशन है, उसमें डॉलर जो है वो मेंशन है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ईमेल। सिमिलरली ये सेकंड एग्जांपल ईमेल का, ये थर्ड एग्जांपल है, ये फोर्थ एग्जांपल है। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स कितने हैं, 3 है, सॉरी 4 है, राइट। डी क्या था, डायमेंशन ऑफ द इनपुट वेक्टर। कोई भी आप डी इनपुट वेक्टर ले लो, कोई भी आप इनपुट ले लो, जैसे कि अगर मैं x4 के बारे में बात करूँ, मतलब फोर्थ एग्जांपल के बारे में बात करूँ, सो 1 0 0, राइट। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इनपुट वेक्टर, डी का मतलब वही होता है, ठीक है। तो जितने भी इनपुट वेक्टर हैं सारे के पास 3 कंपोनेंट होगा, राइट। सो द डायमेंशन ऑफ द इनपुट वेक्टर इज 3, राइट। व्हाट विल बी द साइज ऑफ ट्रेनिंग मैट्रिक्स, और लेट्स कॉल दिस x, क्या होगा साइज, कोई भी अगर आप एक रो लोगे तो वो क्या बताएगा आपको, वो रो जो होगा एग्जाम्पल होगा। कोई भी एक आप रो ले लो, और अगर कोई भी एक अगर कॉलम ले रहे हो तो वो क्या होगा, वो एक फीचर होगा, राइट। अगर मुझे इस केस में देखना हो मेरा जो ट्रेनिंग मैट्रिक्स है वो क्या है, ये है, राइट। साइज क्या है इस ट्रेनिंग मैट्रिक्स का, कितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, एन क्रॉस डी, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कितने हैं, 4 हैं, एंड नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, 3 है, राइट। तो 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा, राइट। कोई भी आप रो पिक कर लोगे तो वो इनपुट, कोई भी रो पिक करोगे तो आप एक एग्जाम्पल का इनपुट पिक कर रहे हो, जैसे कि ये फोर्थ ईमेल है, राइट। तो एक रो अगर मैं पिक कर रहा हूँ तो ये फोर्थ ईमेल और फोर्थ नंबर ऑफ एग्जाम्पल को मैं पिक कर रहा हूँ, right? कोई भी अगर आप कॉलम पिक करोगे तो आप किसी एक फीचर को पिक कर रहे हो फॉर डिफरेंट ईमेल, राइट। और ये आपका हो जाएगा क्या, अगर आप इसको एज अ वेक्टर लिखोगे सो दैट विल बी वेक्टर y विथ कैपिटल लेटर, राइट। और ये जो है सारे उसके कंपोनेंट हो गए, जैसे कि y3 1 हो गया, राइट। ये क्लियर होना चाहिए। बाकी आगे हम लोग जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे और क्लियरिटी आते जाएगा, ऑल राइट। सो आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट लर्निंग प्रॉब्लम, राइट। जितने भी बेसिक सेटअप होना था फ्रॉम मैथमेटिक्स टू टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देख लिया है। अब जो है हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और हम लोग अपना पहला लर्निंग एल्गोरिथम को देखते हैं, ऑल राइट। सो अगर आप इफ़ यू हैव एनी डाउट लाइक सो हाउ, कैसे आपको डाउट पूछना है, और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना, जैसे जैसे आपका ये लेक्चर्स होते जाएगा वैसे वैसे जो है
प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप देखोगे क्यूज सेक्शन में उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट। जैसे अगर हम लोग जैसे ही इस लीनियर रिग्रेशन में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी ना, तो आपको नोट्स भी अटैच हो जाएगा और प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो भी लिंक कर दूंगा, राइट। जैसे कि उसको एक्सेस कैसे करना, सबसे पहले तो डाउट के बारे में बात कर लेते हैं कि डाउट कैसे पूछना। अगर आपको लेक्चर के ड्यूरिंग अगर कोई डाउट आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी कोर्स में इनरोल्ड हो आप, जैसे कि मशीन लर्निंग के कोर्स में इनरोल्ड हो आप, तो आप अप्रोप्रिएट जो भी आपका है उसमें जाओ और जहाँ से भी आप लेक्चर देखते हो किसी भी लेक्चर को ओपन करो, राइट। यहाँ पे ये जो डिस्कशन सेक्शन है ना इधर लेफ्ट साइड में, उस पर आप क्लिक करो, राइट। यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो डाउट। तो जो भी आप डाउट क्रिएट करोगे उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो जैसे कि अभी आपने इस वीडियो को देखा, इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप ये क्रिएट, हाँ मतलब ये मेक श्योर रखना कि आप जैसे मशीन लर्निंग का देख रहे हो तो मशीन लर्निंग में ही क्रिएट डाउट करना, राइट। जैसे ही डाउट करोगे मुझे पता चल जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, राइट। और यहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, बट अगर आप मेरे साथ लेक्चर्स को देख रहे हो, अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ अब नेक्स्ट दिन जो भी लेक्चर आएगा, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू लेक्चर्स को देख रहे हो तो क्या होगा कि मैं देखूँगा कि अगर पिछले लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस दैट, राइट। सो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो डाउट अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो, राइट। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्या है कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, एक अगेन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्यूजेस देख रहे हो, उस पर क्लिक करो, राइट। यहाँ पे जो भी आपका क्यूजेस है वो क्रिएट होते जाएंगे जैसे ही लीनियर, जैसे कि ये रिव्यूज़ हम लोगों ने कर लिया तो सारे रिव्यूज़ जो भी मैथमेटिकल रिव्यू हम लोगों ने किया उसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ गए, राइट। और इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम का खासियत क्या है कि इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको जो है सॉल्यूशन जो है डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क इन द डाउट सेक्शन, राइट। तो ये आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम जैसे ही चैप्टर्स ख़त्म होंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपका आ जाएगा, राइट। और आप इस क्यूज सेक्शन से एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन आस्क द डाउट एंड आप जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। अभी कोई ज़रूरी नहीं एकदम पूरा पेज जाने का, अदर्स भी सब्जेक्ट है उनको रिवीजन करो आप, और साथ साथ में हम लोग इसको भी कवर कर रहे हैं मशीन लर्निंग को, और कोशिश करेंगे कि नवंबर एंड से पहले इसको हम फिनिश कर देंगे, राइट। सो ओके, दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। हम नेक्स्ट